आज के युग में मेडिकल एंड मेडिकोज की पढ़ाई ये सचमुच में एक सेवा है या एक धंधा है? सर, बचपन में मैंने सुना कि आपके हाथ में बुलेट बुलेट लगा हुआ था, गोली लग गई थी। ये क्या इंसिडेंट था, जरा बताएंगे? नाना जी को अचानक पेट में दर्द हुआ सर। राइट। एंड 48 घंटे तक हम लोगों ने मतलब बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस कह लीजिए कि लैक ऑफ मेडिकल नॉलेज कह लीजिए कि लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी कह लीजिए, वी लॉस्ट माय नाना जी आफ्टर 48 आवर्स ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स विदाउट एनी पर्टिकुलर मेडिकल अटेंशन बीइंग गिवन टू हिम। तो जब आप 7th से मेयो में आए तो ऑलमोस्ट 12th तक आप मेयो में रहे? जी सर। उसके बाद यू अप्लाइड फॉर द पीएमटी, तब पीएमटी हुआ करता था, राइट? यस सर, यस सर। डिड यू क्लियर द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट? सर मैं देखता था कि एक बड़ी कॉमन सी बीमारी थी सर, जो हाँ। कि बिहार में मेरे जिले के और मेरे गांव के घर घर में थी। वो Okay. था सर हाइड्रोसील। जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर कारगिल में हुआ था तो also you had done lot of work. What was that? पाकिस्तान was just one of the enemy sir. Okay. Our biggest enemy there was the weather sir. My first cardiac surgery patient was a patient with hole in the heart sir. That was atrial septal defect, which is the hole in between the two atrial chamber of the heart. Many times the doctor becomes like a gaudy character, like I'm a god. Physics का क्या need है मेडिसिन में, या केमिस्ट्री का क्या need है? कभी ऐसा नहीं लगा? What is the need of physics? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के हीरो हैं हमारे सुशील झा। सुशील झा जो कि एक पुअर फैमिली से आते हुए उन्होंने तब मेडिकल की परीक्षा पास की जब सचमुच में मेडिकल टफ था, निकालना मुश्किल था। आज हम इनके लाइफ के जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और एक कैंडिडेट शेयर करेंगे। सुशील झा सर, नमस्कार द राठौर पॉडकास्ट पे। एक सवाल सबसे नमस्कार। पहले आपसे मैं पूछना चाहता हूं सर, आज के युग में मेडिकल एंड मेडिकोज की पढ़ाई ये सचमुच में एक सेवा है या एक धंधा है? सर सच मानिए तो ये दोनों चीज का मिश्रण अभी बन गया है सर। ये एक सेवा और धंधा दोनों का समन्वय हो गया है सर इस पेशे में आज के तारीख में। आज देखिए कि अगर नीट पीजी की बात करूं, अगर 2000 से कम आपका रैंक है तो आपको प्राइवेट में जाना पड़ेगा, और प्राइवेट में जाने का मतलब ये है कि आप करोड़ों रुपया पे आउट करना पड़ेगा, तब आप डॉक्टर बनेंगे। इस जो डॉक्टर 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ दे के बनता है, आप एथिकल बिहेवियर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसे? सर ये बात सच है कि प्राइवेट में मेडिकल एजुकेशन इज थोड़ा एक्सपेंसिव ये एक्सपेंसिव प्रोसीजर तो है, बट उसके साथ साथ में जब आपके पास में नेसेसरी एक्सपर्टीज हो जाएगा तभी तो आप सेवा की भावना भी डेवलप कर पाएंगे। तभी तो जब वह एक्सपर्टीज ही नहीं होगा किसी भी तरीके से तो फिर सेवा का भावना कैसे आपके पास उत्पन्न होगा सर। सर, तो इसीलिए मतलब और ये भी बात सही है कि सर डिमांड और सप्लाई का तो मिसमैच रहता ही चला जाएगा सर, क्योंकि जितने पीजी सीट्स की जहां पर जितने पीजी ट्रेनिंग की जरूरत है उतने सीट्स ही अवेलेबल नहीं है। दैट ऑल्सो टू इन अ गवर्नमेंट सेटअप इट इज नॉट फीजिबल, सो it compels the doctors to get trained in private setup also at some cost, but they only after getting the proper education can only they practice with some kind of service they can do to the society at large. सर एक छोटी सी बात कहते हैं, मैं आपकी जर्नी के बारे में जानता हूं। आपको कब ऐसा लगा कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए? यू बिकेम डॉक्टर बाय चॉइस और यू बिकेम सर डॉक्टर बाय इसके चांस? इसके पीछे सर एक बहुत ही छोटी सी कहानी ये है यस। कि जब मैं 9 साल की उम्र का था और उसमें मैं छुट्टी पे था अपने विद्यालय से, मैं छुट्टी पे था समर वेकेशन में, और ये बात सर 1972 की है सर। ओके। 26 जून 1972 टू बी प्रिसाइज। मैं 9 साल का
बच्चा था उस टाइम। और गर्मी की छुट्टी में मैं अपने नाना के घर गया था सर। और वहां पर एक आम के पेड़ पर चढ़ के एक आम तोड़ने की मैंने कोशिश की, और वहां से मैं पेड़ से गिर गया सर। तो आई सस्टेन्ड अ सुप्राकॉन्डलर कंपाउंड फ्रैक्चर ओ, ऑफ माय राइट आर्म सर, ओ, which compelled me to stay in the hospital for 2.5 months, sir, during ओ, that time. ओ, तो उस समय जो मैंने व्यवस्था देखी, उस हॉस्पिटल में रहते रहते जो व्यवस्था देखी, जो डॉक्टरों के प्रति लोगों का समर्पण देखा, हम्म, तो मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात उठी कि हम्म। मुझे भी अगले समय में मुझे डॉक्टर ही बनना चाहिए, ताकि मैं भी लोगों का सेवा कर सकूं। तो ये सब बैकग्राउंड है। जब मैंने ये सोचा कि मैं आगे चल करके मैं डॉक्टर ही बनूंगा। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात बताइए। आप ये कहना चाहते हैं कि घटनाएं ही फ्यूचर को शेप करती है, आपके जिंदगी में यही आया, अकरेंस मेक डिफरेंस, राइट? सर दूसरी बात यह है कि एक घटना तो एक ये था ही, लेकिन साथ साथ में सर हमने वो देखा कि हम जिस समाज से आज उठे थे सर, उस समय में बहुत ही बड़ी कमी थी सर, मेडिकल व्यवस्था की बहुत ही कमी थी। तो हमने ये सोचा कि भाई आगे में जब चल करके अगर मौका मिले तो इस कमी को थोड़ी सी पूरी की जाए। इसीलिए सर वो दूसरा कारण ये था कि सोसाइटी में देयर वाज अ रियल नीड फॉर द मेडिकल प्रोफेशनल टू गो नीड तो बैक टू सर द आज सोसाइटी भी, एंड सर्व। जहां सर एक छोटी सी बात बताऊं, डॉक्टर की नीड आज भी जरूरत है। बिल्कुल सही इनफैक्ट सर। मेरे को ऐसा लगता है कि आज भी सही डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल है, और जो डॉक्टर मार्केट में अवेलेबल हैं उन पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। कॉरपोरेट हॉस्पिटल के रूप में जब डॉक्टर के ऊपर प्रेशर है कि आपको ये टारगेट अचीव करना है, कोई भी आए उसको हॉस्पिटलाइज करना है, तो आज डॉक्टर्स तो हैं लेकिन जो नीड यथावत जो उस समय था आज भी वही है। आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? सर ये सच है सर, ये सच है कि इसमें सर एक प्रॉब्लम ये मैं देखता हूं कि देखिए सर हमारे देश के अंदर में जो ज्यादा जो पॉपुलेशन है, लार्जली द पॉपुलेशन बेस्ड एट इज द रूरल सेटअप सर। रूरल सेटअप, और यस। यहाँ पर टोटल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है सर, जीरो है। रूरल अर्बन बेस के बेसिस में सर। तो जाहिर है सर कि मतलब कि बिकॉज द फैसिलिटी आर कंसंट्रेटेड एट अ मेगा टाउनशिप और अर्बन एरिया में देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। सो जनरली देन अर्बन द रूरल पीपल are deprived of that medical facility, sir, in totality. And therefore, sir, therefore, what happens is when the people are working in the corporate world, they have to significantly get into the working numbers before they are. So there at times they people might go into unethical practice. It is a known thing, sir. It happens. इस अनएथिकल प्रैक्टिसेस को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? कोई आपका थॉट प्रोसेसेस है या सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट हो? सर इसमें सबसे बड़ी चीज जो मैं सोचता हूँ अनएथिकल प्रैक्टिस को जो बंद किया जाए, वो उसमें है कि लोगों के बिहेवियरल चेंजेस लाना पड़ेगा सर। आप people have to have undergo a behavioral changes by themselves, sir. The mindset has to be changed of माइंडसेट, every doctor individual. माइंडसेट और ग्रीड ऑफ डॉक्टर्स। Yes, sir. The empathy has to be, developed by the doctor, medical professionals. The सर, word empathy. डॉक्टर की ग्रीड को खत्म करना पड़ेगा या उनके माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा? ये दोनों बहुत डिफिकल्ट चीज है सर, डिफरेंट चीज है। सर मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि इसमें इसमें ईगो की बात नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि जो मेडिकल प्रोफेशनल है, एसेंशियली मेडिकल प्रोफेशनल, एनी सर्विस फॉर दैट मैटर, इज टू सर्व सर, इट टू सर्व सम पीपल। एंड इन दिस पीपल वो आर द पीपल सर विथ अस इज द पेशेंट सर। तो हमें तो पेशेंट को सर्व करना ही करना है। सर तो आप, अगर उस सर्विस को हम एम्पैथी के साथ में डिस्कस करें तो इट इज ऑलवेज बेटर सर। एंड वंस यू हैव एन एम्पैथी फॉर द पेशेंट सर, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। सर आप ऑल आर्मी, दिस सब आप आर्मी में भी डॉक्टर रहे हैं, राइट?
जी राइट, बड़े लेवल पे काम किए हुए हैं तो आप में सर्विस है। लेकिन आज के दिन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जो डॉक्टर काम करते हैं, जीवन के अंत में, यानी कि जब उनका लास्ट समय आ जाता है, पोस्ट 60 और समथिंग, अगेन दे गो एंड जॉइन द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, तो कहीं ना कहीं ग्रीडी तो है और क्या है। बहुत सारे एम्स के डॉक्टर भी जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं, चाहे वेदांता हो, नाम लेने में मुझको दिक्कत नहीं है, चाहे पारस हो, चाहे मैक्स हो एंड समथिंग लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी तो उनको लगता है कि बहुत सेवा कर लिया, अब मुझे पैसा ही कमाना है। सर, एक कहावत हम लोगों ने जरूर सुनी है कि सर भूखे भजन ना होई गोपाला। तो ये बात सच है सर कि मतलब, लेकिन जो उसकी जो लिमिट है सर, जो डिजायर की लिमिट है, दैट हैज टू गेट कंटेन्ड सर। हाउ मच इज टू मच। हाउ मच इज टू मच सर, दैट इज व्हाट हैज टू बी डिसाइडेड। राइट, इंडिविजुअल चॉइस है। यस सर। सर बचपन में मैंने सुना कि आपके हाथ में बुलेट बुलेट लगा हुआ था, गोली लग गई थी। ये क्या इंसिडेंट था, जरा बताएंगे। सर इसमें ऐसा हुआ था कि जब मैं मेडिकल में एडमिशन लिया था सर, हाँ। दैट वाज इन 81 सर। ओके। और फर्स्ट टाइम जब मेडिकल में एडमिशन के बाद में छुट्टियों में मैं घर गया, हाँ सर। तो उस समय मैं दिवाली के टाइम में सर, हाँ। हमारे गांव के बगल की बस्ती में एक मेला लगता है। हाँ सर। तो उस मेले में हम लोग गए थे अपने परिवार के साथ में, मैं अपने पिताजी और अपने छोटे भाई के साथ वो मेला देखने के लिए हम लोग गए थे सर। हाँ। वहां से जब हम लौट रहे थे, हाँ। तो वहां पर किसी ने, वहां पे कुछ क्रिमिनल एलिमेंट सब घूम रहे थे उस टाइम में, हाँ। जिनको कि लूट पाट करने की वो ये थी, एक आदत सी फितरत। बनी हुई थी। हाँ। तो उनको किसी ने ये खबर दिया हम्म। कि भाई एक आदमी बैंक से करीब 6,000 रुपया ड्रॉ करके वो जा रहा है, लौट रहा है। ओके। तो दे वर टारगेटिंग दैट पर्सन हु हैड विथड्रॉन 6,000 रुपीज इन ओके। कैश। राइट। अनफॉर्चुनेटली वी वर ट्रैवलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके। और चूंकि मैं बचपन से गांव से बाहर रहा हूं सर, तो बहुत लोग मुझे चेहरे से नहीं ओके। पहचानते हैं। ओके। तो हाँ। उनको ये लगा कि भाई मैं आदमी हूं जो कि मैं पैसा लेकर के वापस जा रहा हूं सर। अच्छा, फिर। So by accident, I sustained that injury, sir. They ओके। fired at me, and they by accident I sustained that injury, sir. So देन that व्हाट is the हैपेंड। story behind that. देन व्हाट हैपेंड, फिर क्या हुआ। Then I was taken to the local doctor, and the same people who had shot me, हाँ। they took me to the hospital also. ओके। But by the time they realized that they had गलत created हो a big mistake, या। तो वही लोग उठा पुठा करके मुझे हॉस्पिटल भी लेके गए सर। ओके। इस इंसिडेंट ने आपको और इंस्पायर किया कि मुझे कोई डॉक्टर बनना चाहिए, उस समय आपको ट्रीटमेंट No, कैसे not मिली। really, sir. Not really. That was not. This was not an issue at all. My first issue was very important. लेकिन डॉक्टर बनने के साथ में उसके साथ एक और भी स्टोरी है, हाँ। विच आई मस्ट शेयर विथ यू। राइट। वो है सर कि 1980 में राइट सर। मेरे नाना जी जो हैं, राइट सर। जो कि मेरे बहुत ही पूजनीय थे, हाँ, राइट। वो नाना जी को अचानक पेट में दर्द हुआ सर। राइट। एंड 48 घंटे तक हम लोगों ने, मतलब बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस कह लीजिए, कि लैक ऑफ मेडिकल नॉलेज कह लीजिए, कि लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी कह लीजिए, वी लॉस्ट माय नाना जी आफ्टर 48 आवर्स ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, ओके। विदाउट एनी particular medical attention being given to him ओके। by a qualified medical personnel. ओके। Now that remained as a sense of guilt to me, sir, subsequently. So I had a guilt that I wish I had taken him to a surgeon. Possibly he could have been सेव्ड। operated and he would have been fine. पॉइंट। So that compelled me to become a doctor and that also a surgeon later on. So becoming a surgeon, this was the reason. सर आपने नाना जी के बारे में बताया, कैन यू से विद इन अ ब्रीफ लाइक दैट्स योर डैड, योर मॉम, योर सिबलिंग्स, एंड हाउ यू स्टडी स्टार्टेड योर करियर्स, व्हाट वाज द इनकम ग्रुप यू वर इन, कौन से इनकम ग्रुप में थे, जरा शेयर करेंगे, लाइक घर के हालात कैसे थे। सर
मैं एक बात मैं आपको कह सकता हूं कि मेरे पूरी एजुकेशन में सर, हाँ। मेरे पूरे एजुकेशन में मेरे पिताजी का एक नया पैसा खर्चा नहीं हो पाया सर। वाह। आई स्टडीड थ्रू आउट माई सेल्फ ऑन स्कॉलरशिप एग्जाम, वाह। and I possibly have acquired the one of the best education in the world, sir. I'm so proud to say that, and I'm very happy to share that with you. I went on a scholarship scheme to on a government of India scholarship scheme to a very prestigious school, Mayo College, Ajmer, Rajasthan, sir. बट सर मेयो I के did my schooling, complete schooling from there, sir. ना स्कूलिंग फ्रॉम विच क्लास यू ज्वाइन मेयो स्कूल? From 7th to 12th, sir. I did from Mayo College, Ajmer, Rajasthan, sir. And here I just want to add on very interesting anecdote to you. In Bihar, sir, at that time in 72, 73, we used to start writing English alphabets in class 6th, sir. या We used to start writing A, B, C, D in class 6th. या And the moment I entered into class 7th, sir, I went to Mayo College, Ajmer, which was राइट a totally English medium school, sir. या So then my struggle for the language started there. हाउ डिड यू I कोप अप? had to really struggle to learn English राइट। and then compete with my peers at that time. ओके। And that school, of course, gave me a very, very cultural, complete change of cultural landscape in me. It transformed me ultimately, sir, to tell you very honestly. कभी My father हाँ। was a cane clerk in a local sugar factory there. So he used to earn about 250 rupees a month max at that time. But ओके। today he takes a huge credit to himself that he could afford to send me to Mayo, even with that kind of a salary that he had that times. ओके। इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। कभी अब जब आप गांव जाते हैं, ऑफ कोर्स डैड ऑलवेज सेज, जो मूवी वगैरह में देखते हैं ना, देखो मैंने अपने बेटे को बनाया। देखो सर, पेरेंट्स के कृति को, पेरेंट्स के इंपॉर्टेंस को तो हम कम नहीं कर सकते कि अगर वो पैदा ना करते तो हम ना होते। वो बात तो बहुत ही अलग है। उनका पैदा करना ही सबसे बड़ा क्रेडिट है इस यूनिवर्स में। व्हाट आई पर्सनली बिलीव दैट वी केम इन दिस वर्ल्ड ओनली बिकॉज दे प्लान्ड इट, राइट, एंड द यूनिवर्स प्लान्ड अस टू कम इन दिस। उसके बाद तो कर्मा है, प्रारब्ध है जो आपको मिला। सर मेयो कॉलेज में जब आए, मेयो स्कूल में जब आए, इतने बड़ा स्कूल में आए, जो आज तक एक मेयो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, रादर जैसे आप प्राउड फील कर रहे हैं 7th क्लास से आगे पढ़ने का, ऐसे thousands of the people get proud of being the alumni of the Mayo। कभी Mayo कभी ऐसा वहां लगा कि आप बिहार जैसे स्टेट से आए तो कोई आपको डीमीन करता हो या डिग्रेड करता हो? कभी ऐसा फील हुआ? कोई इंसिडेंट आपको मेयो का याद हो? सर, बहुत बहुत टाइम में ऐसा होता था. हाँ। And interesting thing I'll tell you, Mayo had three very interesting facets there, sir. राइट। 100% hostel life was there. राइट। Number one, there राइट। were uniforms there. ओह, दैट्स राइट। हाँ। And the third thing was everything was a curriculum over there, sir. Whether ओके। it is hobby, classroom teaching, the sports, everything was part of curriculum there, sir. ओके। So, and besides building the character, राइट। what Mayo has taught me is immense things, sir. राइट। It made me to become self-reliant, राइट। even at that stage. ओके। Then interaction with the, peers राइट। was a very important facets. राइट। Sharing of the communal space, sir. ओके। Wearing the same uniform. That was leveling in all walks of life for us. राइट। So it definitely, but on every Sunday, sir, या। on every Sunday, we used to be putting on the civil dress there, not ओके। uniform. ओके। ठीक है ना, sir? या। And that was the day when all these 20 people who were there in the whole campus, राइट। only 20 people were there, Government of India scholars, sir, in that school. Out of what 1,000 plus, only 20 people were Government of India scholar, and they could be seen from a distance
that they are government of India scholar because of the dress that they used to put on, sir. Oh. So that was one thing in Mayo which used to be very distinctive. Otherwise, sir, Mayo was a level playing. It taught us, it transformed me to give you that much of, I mean, I will give that much of credit to the school, sir. It जब आप really transformed me. so you're giving all credit of your transformation, your ethical behavior, your integrity, Everything, sir, I give it to the school, sir. all the Absolutely. Without blame. सो जब आप मेयो स्कूल से जब गांव में जाते थे तो आपकी इज्जत आपके दोस्त आपके पीयर ग्रुप कैसे करते थे? Sir, they used to really look up to me on lot many aspects, sir. And we used to share like whatever I learned. I saw the first time the playing of a cricket, sir, in Mayo. I ओह, never seen cricket earlier than that. हाँ हाँ हाँ, I अच्छा, saw hockey, how hockey is played in Mayo, sir. राइट। So I used to carry this hockey stick. I used to carry this cricket ball, cricket bat to my village, sir, that time. And then we used to make, we make the cricket bat there, by the local carpenter. We used to take aise bana do. And then we used to play there. And all those people, they used to look up to me. They used to, come and, play with us and everything. And it was a very good sharing of the experience, sir. यू ब्रॉट न्यू डायमेंशंस इन द लाइफ ऑफ दिस चिल्ड्रन ना। सर एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ कि आपने अंग्रेजी सीखा तो जाके ये अंग्रेजी का प्रयोग अपने दोस्तों पे गांव में किया, कांग्रेस, थैंक यू, मूव फॉरवर्ड, वो बोलते हैं क्या बोल रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कि अंग्रेजी आपने उनसे बोलना शुरू कर दिया? इट्स वेरी फन। नहीं सर, वो चीजें नहीं हुआ, बिकॉज वो चीजें कभी नहीं हुआ और आज तक भी नहीं होता सर। हाँ, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव कि डू एज रोमन्स डू इन इन देयर ओन प्लेस। राइट। So I always believe I used to dress the way, I mean, they used to dress over there. I never will throw the, uniform or things like that there. जो खाना वो लोग खिला सकते थे मुझे, वही खाना मैं खाता था उनके साथ में, वही खाना उनको मैं खिलाता था सर। खाना तो सही है, लेकिन आज भी इंडिया के लोग अमेरिका जाते हैं, 4 महीने के बाद आते हैं, उनका स्लैंग चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो नहीं नहीं जाता सर, है। कभी ऐसा दैट नहीं आई हुआ? डिड नॉट अलाउ इट टू गेट परमिटेड into me, sir. I was very clear in that. I कभी आपने always remained root connected, sir, with my village people. मेयो के अंग्रेजी को वहां फ्लेक्स कभी नहीं किया गांव में बच्चों के सामने? नेवर एवर? नहीं सर, कभी कभी नहीं सर, कभी नहीं सर, कभी नहीं सर, कभी नहीं सर। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट्स नाउ अगेन, व्हाट योर मॉम वाज डूइंग? मदर क्या करती देखिए थी? पान सर, मदर क्या करती थी? my mother, हाँ, my mother is a housewife, sir. अच्छा। Absolutely housewife. एंड डैड वाज अ क्लर्क इन अ शुगर केन फैक्ट्री, राइट? Yes, yes, sir, yes, sir, yes, yes. राइट, दैट्स गुड। तो जब आप 7th से मेयो में आए तो ऑलमोस्ट 12th तक आप मेयो में रहे। जी सर। उसके बाद यू अप्लाइड फॉर द पीएमटी, तब पीएमटी हुआ करता था, राइट? Yes sir, yes sir. डिड यू क्लियर द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट? No, I cleared in second attempt. I'll tell you why. राइट, Because my first attempt, I appeared for Bihar medical entrance in राइट, 1980. राइट, That exam for some reason got cancelled. So again we had to appear again. The राइट, result of that exam came in 81, राइट। late 81, sir. ओह, In between, sir, 81 mein I appeared for AFMC Armed Forces Medical College. That राइट, was my actually second attempt, sir, ओके, for AFMC. And I राइट, got selected and I got admitted to AFMC, sir, before my first attempt result came out from Bihar. राइट, राइट। So it was actually my second attempt, but appeared first time in AFMC, sir. Tell your journey in the medical colleges and FMCs. You joined That that. was another fantastic journey, sir. The same system, what was there in my school, Hmm. the sense of discipline, Okay. the sense of ownership, the sense of uniform. Like we used to put our uniform in medical college also, sir. Oh, Armed Forces, I did my medicine from Armed Forces Medical College, Pune, sir. right. So there you have a uniform code, sir. Okay. So the same concept of uniform labeling you at every level, sense of discipline because it's Armed Forces Medical College, and studying with purpose got fulfilled, sir, in AFMC, sir. Sir, So my clinical journey, my academic journey in medical college remained
at certain level, sir. A good level, I would say. और वेरी सिंपल पॉइंट, जब आप 5 years मेडिसिन कर रहे थे, 5 year मेडिसिन कर रहे थे, तो उस समय आप जैसे बताया बिल्कुल क्लियर था कि सर्जन बनना है, बिकॉज यू हैड फेल डाउन द ट्री, Oh, आप गिर yes. Yes, yes. That उस टाइम was पे नहीं थे। 100% sure. अच्छा, I had to become surgeon. 9 साल का जो सपना था, पेन था, वो डायरेक्शन अभी तक जिंदा किए थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। वाओ, दैट्स वेरी गुड। और आपके इस मेडिकल कॉलेजेस में आपका टोटल कॉस्ट कितना लगा होगा? जीरो? Again, sir, I studied free of cost there in medical college. I told you, na, sir, my complete education have been free of cost. We used to have a stipend in Armed Forces Medical College, sir. राइट, बट So स्टाइपेंड we राइट used to होता get है, about 250 rupees per month, and बट that was our college fees and all the thing. stipend you must be getting in PG, not in medical college, I think, not in No, no, UG. no, sir. As an MBBS days only, we were getting stipend in the medical college undergraduate days only, sir. Oh, still there? It's still there, sir. Now that it is free of cost completely. Armed Forces Medical College is completely free of cost, sir. Oh, that's good. That's good. Is there any criteria? But you were not from the army background, but you got into that. Is there criteria that Yes, only sir. army That was can? they used, sir. They used to conduct All India Entrance Exam. AFMC was the All India based competition exam, and Right. I came through that only, sir. किसको आपने पहली बार ऑपरेट किया? हाँ, सर क्या हाँ, था कि मैंने देखा था कि डॉक्टर की नीड जो है सर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बहुत बड़ी थी, कि देयर वाज अ सिग्निफिकेंट नीड ऑफ मेडिकल पर्सनल एट विलेज लेवल, सर। राइट। अब क्या है कि सब मैंने देखा कि जब मैं छुट्टियों में गांव जाता था ना सर, जब मैं हाँ सर। आर्मी में था, एंड आई वाज नॉट अ हाँ, सर्जन, आई वाज जस्ट प्लेन सिंपल एमबीबीएस, सर। राइट। तो हाँ, आर्मी में जब हम सर्विस करते थे सर, हमको 2 महीने का एनुअल लीव मिलता था, हाँ सर। और 20 दिन की कैजुअल लीव हमको ऑथराइज होती थी, सर। राइट, राइट। हाँ, तो चूंकि आई वाज अ बैचलर, सर, मोस्ट ऑफ द एनुअल लीव आई यूज्ड टू स्पेंड इन माय विलेज, सर। ओके। तो वहां पे जब मैं जाता था सर, तो मैं देखता था कि एक बड़ी कॉमन सी बीमारी थी, सर, जो हाँ, कि बिहार में मेरे जिले के और मेरे गांव के घर घर में थी। वो ओके। था सर हाइड्रोसील। ओ, दैट वाज अच्छा। हाइड्रोसील, सर। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है, फिर? ठीक है ना, हाँ, सर? हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं, इसको मैं ना जड़ से उन्मूलन करना है मुझे अपने एरिया में। हाँ, ठीक है। ठीक है ना, सर? हाँ, तो मैं वहां पे जो लोकल जो मेरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, हाँ, वहां पे एक डॉक्टर साहब को सर जाकर के मैंने बात किया कि मैंने, डॉक्टर साहब ऐसा है कि मैं फलने गांव का एक डॉक्टर हूँ और आर्मी हाँ, में मैं काम करता हूँ। हाँ, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट, मेरे गांव में बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि हाइड्रोसील के पेशेंट हैं। उनका सर्जरी क्या यहाँ पे हो सकता है क्या? करवा हाँ, सकते हो? तो उन्होंने हाँ, बोला हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा, कोई बात नहीं, ले आओ ले आओ। हाँ, तो उसी में सर मेरा जो पहला, सबसे पहला जो पेशेंट था, हाँ, उस पेशेंट को, वो सर हमारे यहाँ पहले नौकरी करता था सर, वो लड़का। अच्छा। एंड ही वॉज वेरी वेरी पुअर बॉय। हाँ, तो उसको मैंने बोला कि भाई तुमको ये प्रॉब्लम है तो तुम ऑपरेशन कराएगा? कहता हाँ साहब, अगर आप करोगे तो मैं करवा लूंगा। हाँ, तो ही वॉज माई फर्स्ट पेशेंट सर, जिसका कि मैंने हाइड्रोसिल का ऑपरेशन किया अपने गांव में, सर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। और हाँ, उस ऑपरेशन करने के बाद में सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वहां पे लाइन लग गई थी, सर। कि उसके बाद में जो भी हाइड्रोसिल का मरीज उस आसपास में था, वो सबका ऑपरेशन सर मेरे हाथ में हुआ। मैंने करीब करीब 400 से 500 मैंने हाइड्रोसिल की सर्जरी की है उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, अलग अलग छुट्टियों में। but it was a divine power. It is a complete divine power because that time you were not a doctor. आप अभी just UG कंप्लीट करके गए थे। यस, मैंने एमबीबीएस करके मैं गया था, सर। हाँ, ये से डिवाइन पावर है, तब तो सर्जरी का एक्सपीरियंस था, हैंड ऑन नहीं होगा आपका। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर। वाह, ये तो पूरा सो डिवाइन पावर रहा। हाँ। तो उसके बाद में सर, उसके बाद में वाइल वी आर डूइंग दैट, फिर एक बंदा आया हम्म। कि हर्निया का ऑपरेशन कर सकते हो आप क्या? ओ, फिर? तो मैंने कहा कि नहीं, वो हर्निया का सर्जरी मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब के साथ मिल करके उसको करूंगा। तो ओके। फिर वो डॉक्टर साहब से मैंने उसको, उनसे पूछ करके उनको करवा, तो वो भी कर दिया, तो वो भी ठीक हो गया, सर। बट अच्छा। दैट देन लेटर ऑन कंपेल मी कि दैट यू शुड बिकम अ सर्जन एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग दैट प्रोसीजर। So that he was in any case, sir. I was thinking of becoming a surgeon. बट आर्मी में सर एक पिकुलरिटी थी उस टाइम में, कि कुछ दिन तक आपको नॉर्मल सर्विस करनी पड़ती थी पहले। या। उसके बाद ही आप सर्जरी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते थे आप। ओके। कम से कम 3 साल सर्विस तो वॉज मैंडेटरी पीरियड बिफोर यू कुड अप्लाई फॉर दी सर्जरी पोस्ट ग्रेजुएशन, सर।
Okay. So that is why it took surgery at a later stage. So I joined surgery in way back in 93. Oh. Oh. 85 से लेकर के 93 का I was just a GDMO सर with MBBS degree only. Oh. Now, you coming to the 93, I thought that you had also contributed जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर कारगिल में हुआ था, तो also you had done a lot of work. What was that? Sir, what had happened was that इसके पहले sir, while I was a plain and simple MBBS, Right. I must tell you, my first posting, my first posting in Armed Forces Medical Services was in Ladakh sector, sir. Oh. From 87 to 90, I was Oh, posted in Ladakh sector, sir. okay. Now, as part of that sector, Ladakh sector, I served for 4 months in Siachen Glacier, sir. I was there on the top, I where the can temperature ranged from -10 to -50 degrees centigrade, sir. I know because one army man I was interviewing and he said कि हम हमेशा भगवान को बोलते थे कभी ऐसी सजा ना दे कि सियाचिन में मेरी पोस्टिंग हो, and you were that posted. Share some story there. What happened with this snowfall and all these things? So, I mean, sir, the life was absolutely, we were fighting so many enemies. Okay. Pakistan was just one of the enemies, sir. Okay. Our biggest enemy there was the weather, sir. Okay. Yes. Yes. People say Weather that. was the biggest enemy over there, sir. Right. And there was a huge uncertainty in Siachen sector, sir, Okay. because we did not know what will be the life after 2 minutes or 1 minute. Nobody knew. Suddenly, one will go into a crevice. Somebody will get buried in the avalanche. There's so many uncertainty was there in Siachen Glacier, sir. But Oh. notwithstanding that, it was a very good and fruitful experience, which made me a mature doctor, sir, because we could understand the problem of high altitude personnel. And let me also share with you, it was a great morale boosting factor for the troops who were non-medico and were serving there on the top, sir. कभी दिल में नहीं आया कि छोड़ो यार कहीं बाहर जाकर प्रैक्टिस कर लेंगे? सर उसका मौका ही नहीं मिला ना, because once I got down from Siachen, I got selected for my post graduation. ओके. हाँ हाँ. तो ये इसी उधेड़ बुंद का समय ही नहीं मिला सर कभी, कि मतलब कि अभी छोड़ के चल देते हैं कि इतना परेशानी हो गई, ऐसा नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला. प्लस सर, इट वाज अ वेरी गुड सिस्टम of functioning. The cultural landscape was very good working in army, and it gave you a lot of confidence to work, and good culture backgrounds. Army's culture is always a uniformity, always. Absolutely, sir. Absolutely. वो दुनिया अलग Goes है. without saying so, sir. हाँ, ये दुनिया ही अलग है, आर्मी का दुनिया ही अलग है. And That's no what. interference, no interference, sir. Hmm. You do whatever you feel best. You practice ethically and scientific basis practice. Oh. You are not compelled to do anything unjust by any means, sir. What you feel appropriate, you are allowed to practice in that way, sir. That is Share armed some, forces culture, sir. sir, share some incident, what exactly you went through under when the Kargil war was there. Sir, I was during the Kargil operation. I was posted at a place called Samba. Okay. I don't know. Is a station Hmm. which is about 40 kilometers short of Jammu, sir. Okay. Uh-huh. And from there, I used to be hitchhiking as a surgeon Hmm. to a place called Poonch, Rajouri, Hmm. Surankot, Jammu. This was the area of operational requirement. Okay. Remember one thing, sir, when the Kargil operation was going on, this western border Hmm. towards Jammu side also Hmm. was equally active, sir. Okay. Hmm. It was not that the operation was going on only in the Kargil sub-region. The operation was going on this side also. Rajouri Punch also sector also was active. Right. Right. So I had a provision where I was placed at a place called Rajouri, Right. where a lot of casualties used to come, and we worked. I can tell you one thing that I can share with incidents that once what happened is that 24 casualty came Oh. to our hospital setup at Samba itself. The first casualty when they came,
he had a gunshot wound of the abdomen, sir, and Oh, the bullet had passed through the spine के बगल से होते हुए निकल गया था बाहर. okay. वो पेशेंट जैसे आया सर हमारे पास हॉस्पिटल में, उसको हमने कैथेटराइज करके देखा कि ब्लड नहीं आ रहा था उसके Mm, कैथीटर में. उसको mm, हम लेकर के जम्मू गए. okay. जम्मू में आकर के हमने उनके सर्जन के साथ मिलकर के हम उसको ऑपरेशन कर रहे थे. इस Mm, बीच में सर, इस बीच में 22 कैजुअलिटी और आ गई हमारे पास oh, सांबा में सर. okay. देन देयर वाज अ कॉल कि नहीं आप वापस आइए बिकॉज यहाँ पे लॉट ऑफ कैजुअलिटीज हैव कम. सर, आई नॉट टू बोस्ट, नॉट टू टेल यू, नॉट टू एग्जैजरेट, but we operated continuously for about 36 hours, sir, uninterrupted. We And same, operated all those 24 casualties. We lost two of them in the bargain, but they died because of the severity of the injury that they had suffered. And rest all the patients were operated, they were always saved, sir. And it gave us a lot of confidence to work uninterrupted for a long time, and that matured me a lot. After that experience, I matured as a surgeon, sir. that's again 30 years back almost. Yes, yes. You must be quite young. Abhi bhi young hai aap. Very young at the times. As a young surgeon, worked in. उसमें सर एक एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जब हम लोग, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था ना सर, तो उस समय में व्हाइल आई वाज डूइंग एमएस जनरल सर्जरी, दिल्ली, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है सर, मैंने अपना एमएस. ठीक है Mm, ना सर. ah, तो वहां पे उस समय में वी हैड रोटेशन इन ओनली टू सुपर स्पेशलिटी सर, oh, इन ड्यूरिंग द एमएस जनरल सर्जरी. oh, Now, the two super specialty which I had thought, right. which will be of importance to me, I had decided to go in for neurosurgery, sir, Okay. and I had gone for neurosurgery, sir. Oh, ठीक है ना sir? oh, yes. I had not even dreamt of cardiothoracic surgery at that time. Oh, So because of that, sir, I had no idea of any kind what to do when you have a chest injury, right, when you have an injury to the heart. right. I had no ideas. Oh, So what happened, sir, during the Kargil operation, right, whenever a patient with gunshot would chest will come, right. huh, I was very, very scared and very skeptical, sir. Oh, What will be done for that? oh, 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 So it's because of that experience of mine post Kargil operation, I thought, in case I have to do super specialty, right. it will be cardiothoracic only. Oh, And that is why I went down to become a cardiothoracic surgeon later on. wow. What an amazing challenges you're giving to yourself. Wow. Yes, yes. That when you're explaining, in fact, I was recalling the movie scene, the Pearl Harbor, or the movie scene of the Joan of Arc, where how exactly doctors are getting working on the operations and all these things, or World War, any movies happens in the World War I and World War II. That was coming across my eyeball, and I was just going the pair of my eye was looking for that. Wow, you are a hero who's operating the another hero. So hero is operating the hero. Wow, it's amazing. Thank you so much. God bless you. You got a purpose in your life. How did you feel while we are operating the soldier, who are in the uniform of the soldier? How did you feel? What was feeling, in fact? Sir, I'll after I became a cardiothoracic surgeon, sir, I've been operating and I must have done about 2,500 odd open heart surgeries, sir, to my Okay. credit. So, But interestingly, sir, I will share with you that I have, as a cardiac surgeon, sir, I have seen all the top-notch hospitals of the armed forces in the country, sir. such as? I have worked in all the top-notch hospital of the armed forces. Name this. The name is like Command Hospital, Bangalore, sir. Armed Right, Forces Medical College, Pune. right. Command Hospital, Pune. Army Hospital Research and Referral Center, New Delhi. INS Ashwini, Bombay. All these hospitals are top-notch hospitals, sir. And I happen to have worked in all these hospitals. Ever you, And I have yeah, operated on any number of these serving soldiers, their dependents like families, mother, father, wife, everybody.
just to to share with you few incidences as a cardiac surgeon. Like I operated one, my first cardiac surgery patient was a patient with hole in the heart, sir. That was, atrial septal defect, which is the hole in the between the two atrial chamber of the heart. Now there was an 11 years old girl who is brought to me, and to she has taken that undergone that surgery by me, sir. We operated that child. This child, when she becomes little adult, 21, 22 years of age, she gets married, sir. And she gives birth to a daughter. This girl sends me an invitation to attend her marriage and to attend to the annaprasana of the child, sir. And I have gone, I have visited that patient, I have attended that annaprasana of the child, and it gives me a different kind of feel altogether as a cardiac surgeon. My patient getting married subsequently, then bearing the child, and getting invited for this thing. Then, secondly, sir, I always save all my operated patients this thing on the day of the surgery करके ना सब उनको सबको मैंने डेटा को प्रिजर्व करके रखा है अपने पास. जिस दिन उसकी सर्जरी हुई है सर, उस सर्जरी का नाम लेते हुए उस पेशेंट का नाम को साथ में उस डेट पे मैंने सेव कर रखा है. So what happens is on that particular day, invariably I get a call from all that patients of mine because they celebrate that as a their birthday, new birthdays with me. So कमाल है. this is one of my practice, sir, which I feel it should go on with the other people should also take on this kind of a mantle of practice. The second thing is while I was in Delhi, sir, a very interesting facet I added to my practice. When the patient, all the operated patient, they come to Delhi from far off places, like they come for the OPD care. Now, what happens invariably is that, whenever they come, I may not be in the OPD that day, I may be operating. So what happens is they perforce, they have to stay, put somewhere in Delhi. Then they have come back next day to attend to the OPD. So I started another unique practice of mine. Whenever I will travel to Bihar, let's say by train from Delhi, sir, I used to inform all the stations. Jahan par maine all the patients of mine were marked with the stations on. And they will be informed the doctor is traveling by such and such train, and this is his coach number. They will all come to the respective stations, sir. I will just see them and I'll continue their medication. That's all I should do. That is to save their whatever their journey period. The journey burden was saved. Financially, they were also less burdensome. This was taking a huge, people took a lot of advantage of that, and rightly so. So this is also one of the practice that I continue. सुशील से पर And इसमें तो in टाइम. modern parlance, sir, we name that as an outreach program of us. So this was my outreach program right from the very beginning, sir, of the practice. सर एक बात बताइए, बट ये टाइम स्टेशन पे रुकने का 2 मिनट तक होता है तो. बस सर उतना ही काफी है. हमने देख लिया पेशेंट इज वॉकिंग, टॉकिंग, फाइटिंग फिट. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, सर. अब ईसीजी को मैं देखूं और पेशेंट को चलता फिरता देखूं, इट्स द सेम थिंग ना सर. वाओ, चलता फिरता इज मोर बेटर देन ईसीजी. That is what I'm saying. It's just matter of 2 minutes. All okay. That's fine. Continue. Have you ever experienced that the person behavior is normal but the report is not good, but even you telling report को छोड़ो यार, तुम सही हो ना, क्या करना है, ऐसा कभी हुआ? बहुत बार हुआ है सर. हाँ. बहुत बार मैंने किया है लोगों को. हाँ. I have told them कि मैं don't worry about this report. Right. As your machine is working absolutely efficiently fine, don't worry. Right. I have told them many times. Wow. कभी मेडिकोस. Because this is what is the holistic practice, na sir. You are not a technician, sir. You are a doctor. Doctors are supposed to be holistic person. We have to see the patient as a whole. We are not fixing a particular system. Oh, like And this is the most important gray area in today's medical parlance, sir. yes sir. We have become a fixer.
We are not holistically looking into things. Agreed. 1000 agree. Doctor has become fixture rather than holistic uh, uh, human being, right? Holistically serving the humanity, right? Because operation करने से bill बन रहा है, right? Meter is getting down. Wow, superb, amazing. अच्छा सर, एक बात बताइए, when did you get married? In fact, after doing MBBS or became surgeon, and like, what was your wife was doing and everything? How it came? Sir, what happened was, again, it has got a lot of interesting anecdotes of that there. Right. See, what happened was that I met few uh, Well, few persons in my life. right. Started liking few of them also. ओ, मतलब आपको प्यार भी हुआ? And आपको प्यार भी हुआ कॉलेज में? हाँ जी सर, हाँ जी सर. क्या I बात है I सर, don't पढ़ाई? disagree with that. पर इतनी पढ़ाकू लोगों के प्यार भी होते हैं, आई डाउट. हाँ नहीं नहीं सर, होते हैं सर. अच्छा, एंड होते मुझे हैं. भी हुआ, मुझे हाँ, भी हुआ, बताइए मुझे भी बताइए हुआ. क्या हुआ, हाँ, कैसे हुआ? Now, the interesting part was that इन बिहार में सर उस समय में काफी लोग आते थे मेरे फादर को कंसल्ट करने के लिए हाँ, कि भाई आप अपनी बेटे की शादी कराओ. अभी तो आपका लड़का जो है एमबीबीएस में घुस गया है. तभी से जो है ना सर. एंड आई वॉज वन ऑफ दोज हाई रेटेड फेलो इन दैट एरिया बिकॉज एलिजिबल ऑफ माई बैचलर. मेयो मोस्ट बैकग्राउंड. मोस्ट एलिजिबल बिकॉज बैचलर. हाँ, because of my Mayo background and then plus getting into the medical college that also in Armed Forces Medical College Pune, but it was little thing. So राइट. I I have one younger brother sir and one youngest sister there. राइट. हाँ. ठीक है ना sir? हाँ. And I told you about the financial state of the family was not very good. हम्म. So I had told my father कि don't worry, I will get my sister married by whatever way हम्म. I will adopt, I will get married. हम्म. बट द अदर पीपल स्टार्टेड टेलिंग माय फादर कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम अपनी बेटी की शादी करा करके बेटी की शादी कर लो. हाँ. कहता कैसे करा लूं, कहता कि नहीं इसका दहेज दे करके तुम उसकी शादी करा दो. ठीक है ना सर. फिर हाँ. सो बट आई टोल्ड माय फादर नो, आई विल नॉट टेक डॉरी. So that was one thing. I'm talking to you in about 90 sir. Yeah, Late 80s and 90 की तक की बात बता that रहा हूँ. time dowry was on the pick in Bihar, right? Yeah. Not only dowry, sir. There were a lot of other issues also. You know, related to the dowry, there was something called kidnapping, ओ marriage at gunpoint. ओ जो शादी में आता ना, किडनैप, दूल्हे को किडनैप करना, एक हाँ हाँ परिणति हाँ का सर. वो भी आता, आई हाँ. परिणति सर तो चोपड़ा का. हाँ. वही वही मैं बता रहा हूँ सर कि that was the era, that राइट. time, you know. राइट देन. So anyway, I mean, and but the people did not know one thing that my father had to fill up a bond ओके. when I was studying in FMC that I cannot get married as long as I'm a student in FMC. This ओह. the people did not know in society. ओके. तो वहां पे गांव में सर एक बहुत ही गलत फहमी, मतलब हवा, आग की तरह हवा फैली कि नहीं नहीं इनको बहुत ज्यादा डॉरी की डिमांड है इनकी, हाँ. इसीलिए कहीं पर ये आ नहीं बढ़ रहे. अच्छा. हाँ. समझ गए ना सर. हाँ, समझ गया, दहेज चाहिए, हाँ. हाँ दही चाहिए. और हाँ. मैं यहाँ पे बोल रखा था कि मैं दही तुम्हें लूंगा नहीं. हाँ. ठीक है हाँ. ना. ठीक है. तो इस अधेड़ बुंद में वो सब चल रहा था. हाँ. अच्छा, तीसरी बात क्या हुई थी सर हाँ. कि और मैं आपको एक बार और ये बता दूं कि मैं उस समय में सर्जन नहीं पढ़ा था सर. अच्छा. I हाँ. was not I had not entered my surgical parlance. राइट. हाँ. I mean, by the time I got married, I had not got into the surgery. राइट. हाँ. ठीक है ना सर. हाँ. तो मैं सर्जन तो था नहीं, मैं डॉक्टर था, मतलब राइट. एफएमसी हाँ. से पास किया हुआ डॉक्टर था. हाँ. तो उसमें क्या हुआ सर कि एक बहुत ही छोटी सी एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट बताता हूँ. एंड दिस हाँ. इज नॉट एन एनेक्डोट, एक्चुअली इट हैपेंड. राइट. हाँ. तो मेरे जो नाना जी थे ना, जिसका डेथ के बारे में मैंने आपको बताया हाँ. था हाँ. 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 कि he died like that in a circumstances. Now he used to work as a guard राइट. in a royal family in Purnia, sir. That was a royal family. ओके. हम्म. They were a royal family. वहां पे इनकी ड्यूटी थी एज अ दरबान. My हम्म. Nana ji was a darban in that family.
हम्म, और उन्होंने क्या किया था सर, उस फैमिली ने क्या किया था कि उन्होंने एक अपना सेगमेंट, लैंडेड प्रॉपर्टी का एक सेगमेंट, जहां पर कि मेरे नाना जी का घर है अभी, हम्म, वहां उन्होंने अपनी जमीन का वो हिस्सा जो है इनके अंडर में डाल रखा था कि भाई हम्म, आप इनकी उपजा उपजा करके और उसको हमारे पास भेजते रहो, और आप अपना भी घर चलाओ। हम्म, ठीक है ना सर? हाँ, सो दैट वाज अंडर केयर ऑफ दैट। नाउ राइट, व्हाट हैपेंड सर, व्हेन दैट नाना जी डाइड इन 1980, हाँ, ठीक है ना सर, हाँ सर, तो उनके श्राद्ध में हमने इनके परिवार को निमंत्रण दिया उसको अच्छा, श्राद्ध में आने के लिए। ओके, ओके, And I was, that time I was studying, I had just passed out of Mayo College, sir. You will appreciate that what I'm trying to tell you now has got a huge impact. So when this invitation card was sent to that royal family, लुक्स फिल्मी, हाँ, they sent their Darban ka beta to attend that function. ओके, Nobody from the main family came to attend to that Shraddha families, Shraddha Karma. हाँ, हाँ, This I could appreciate that as a young lad just passed out from you. हाँ, So what happened in late 80s, ओके, उसी फैमिली में से देयर वाज वन डॉक्टर मोहन राय सर। हाँ, राइट, डॉक्टर मोहन राय वाज द फर्स्ट कार्डियक सर्जन ऑफ इंडिया सर, ट्रेन फ्रॉम इंडिया, हाँ, 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 बट वर्कड इन यूएसए सर ऑल थ्रू हिज लाइफ टाइम। राइट, नाउ हिज डॉटर वाज ऑफ मैरिजेबल एज, लुक एंड फिल्मी, दैट दैट्स थिंग व्हाट केम आई टू वाज मी, सेइंग, हाँ, देन, दैट वो रिश्ता आया सर मेरे पास। ओके, And I was also on one of the vacation. I was there in Chutti at my village only that राइट, time. राइट, So my father and my mother, everybody accepted कि अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा है, सब कुछ हाँ हाँ कर दिया. But my father made one point to that gentleman's father, Dr. Mohan Rai's father, because he was that the Malikana of my Nana ji, na. So that gentleman was also there, the elder Roy member. हम्म, तो उनको बोला कि चाचा जी ऐसा है कि हम लोगों की तरफ से स्वीकृति तो है, मेरे पेरेंट्स ने बोला उनको, लेकिन लड़का भी अभी घर पे ही है, आप लड़का से भी एक बार बात करो। तो आई वॉज कॉल्ड सर, मैं मुझे बुलाया गया बाहर में। जब मैं बाहर में आया तो मुझे बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे काम के लिए लोग आए हैं। तो मैंने साफ शब्दों में मना कर दिया उनको। व्हाट मेड यू टू से नो? या दैट इज द इंटरेस्टिंग स्टोरी सर। राइट, तो ही टोल्ड मी कि व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम, डू यू हैव अ प्रॉब्लम विद द गर्ल? आई सेड नो. Do you have the problem in Dr. Mohan Rai? Because he had married a Yadav girl, Dr. ओके, Mohan Rai himself. I said, राइट, no, I have got no problem on that also. राइट, Then he asked me, what is the problem? I said, yeah, I have a problem because my Nanaji was a Darwan at your place. When he died, I had sent you people to invite. Whom did you send for that to attend the ceremony? वो दरबान के बेटे को भेजा था, आप लोगों में से किसी को ये मौका नहीं मिली थी। तो जब माय नाना जी हैड गिवन कंप्लीट लाइफ टू योर फैमिली, and this is what you have actually given to him back, I don't think I can do justice. Because if ever your granddaughter will ever tell me that I'm so and so's grandson, I'll kill her that day. So it is better I don't get into this alliance. So that was the reason, sir, because of the family tree at stake. The dignity of the family was my topmost priorities. This was the reason I did not get married there. Then, as I told you, I also loved somebody, but there again, caste barrier was there in that whole game, and I was very clear that till the time my sister gets married and settled, आई विल नॉट मैरी, I will not be able to take a decision of any kind, which will hamper onto this equation later on. बिकॉज इंटरकास्ट मैरिज, Yes. So I said that is just not possible till the time this thing is settled down. So that also fizzled out.
Then finally, तो पहला प्यार टूट ultimately, गया। then तो हाँ जी पहला सर। प्यार, पहला प्यार जाति के नाम पे टूट गया। हाँ, अच्छा, वो फिर टूट क्या गया सर। हुआ? हाँ। टूट नहीं गया, मतलब वो एमिकेबली वी held on to the each other's value, नाम कुछ भी and it बोलो, was not with the any। सेपरेट तो हो ही गए ना। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ, फिर। तो ये हो गया सर। देन फाइनली व्हाट हैपेंड वाज दैट इन द होल सर्कल, हाँ। it was became very very commonly known that possibly I'm already married. That's why marriage is, I'm not। देन फिर इंटरेस्टिंग देन। ठीक है ना सर। हाँ। अब किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, मतलब चलता रहा। हाँ। देन फ्रॉम लद्दाख सेक्टर सर, या फ्रॉम लद्दाख सेक्टर या I got posted to Ahmedabad. ओ। हम्म। So when I went to Ahmedabad on posting, I was a हम्म। bachelor again there. या Then there was one patient who came to me. ओके। Hmm. तो उसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा था, आई ट्रीटेड हिम, हाँ। ही बिकेम क्वाइट ओके। देन ही आस्क्ड मी वन डे कि साहब आपकी फैमिली फैमिली किधर है? मैंने कहा मेरा फैमिली कोई है ही नहीं, अच्छा, फिर। मैं तो बैचलर हूँ। तो हाँ। क्या आप शादी करोगे? मैंने कहा शादी हाँ। तो करनी है मुझे। फिर। देन दिस रिश्ता केम सर। वाज इट फ्रॉम सेम व्हेन आई कम्युनिटी? फाइनली, देन दिस रिश्ता केम। तो व्हेन दिस पेशेंट वेंट टू टेल देम कि ऐसे ऐसा लड़का है, तो दे डिड नॉट बिलीव हिम अर्लियर। हाँ। ही सेड उस लड़के को बोलो कि हमसे बात करेंगे, ये फोन नंबर है, बात करेंगे। हाँ। वो जब मेरे को बोलने के लिए आया, मैंने उनको बोला कि मैं गर्जू नहीं हूं, मैं बात नहीं करूंगा उनसे। सही बात है। द वर्ड गरजू। ठीक है। ठीक है ना। अगर उनको चाहिए तो वो यहाँ आए मेरे से मिलने के लिए। इट करेक्ट वॉज करेक्ट। देन व्हेन दे वर कम्युनिकेटेड विद दिस स्टेटमेंट ऑफ माइंड, then they realized कि yes there is a boy there. So then they came, met me. I directed them to come to my village. They came and they saw, and I told them कि don't look at me, you have to go to my root to realize that where is your daughter likely to get married fixed. तो आप उसको देख करके फिर आप डिसीजन लीजिए आप। So they came to my village. They met my grandparents. They met my parents, and they settled down and we got married. 91 we got married. सेम कास्ट? Same caste, sir. Same caste. Mythil, she was also medico. She was doing MBBS from Jamnagar Medical College, Gujarat. ओके। They were based at Ahmedabad. ओके। From birth to till now, they were based in Ahmedabad only. So that was a luck by chance that I had to get posted from Ladakh to Ahmedabad to get married. This. All divine, all divine. Marriage is always divine. Now, coming to your profession, sir, personal life, say, hey, ever you thought to leave the government hospital and go for the private to earn more money or whatever might be? कभी ऐसा किया आपने, या चांस मिला? No. Sir, I tell you one thing, the service has been my topmost priority, and patient care has been my biggest, strongest point. I Hmm. have never, ever felt Hmm. on the Hmm. economy of treatment, sir, ever. Hmm. Hmm. Never looked into that segment at all. Even today, sir, even today, let me tell you point blankly, I have got no idea of the costing mechanics. Oh. And luckily for me, in armed forces, sir, we are supposed to be providing best of the care Yeah. at no cost. Ah. So I never thought it is better to go outside and work in the private. Never I thought, because money has never been a consideration. And one more secret I'll share with you, sir, is that my father had no money. I got the best of education. So why money required? For what? How much is too much? Same thing again, na? So How? whatever we are getting, we are very happy, sir. We are very happy. My wife, after doing her MD, MBBS, MD, she also joined for short time. She also joined armed forces. She served for 5 years in army. Then she left, and then she has been working as a corporate pathologist. Right So now, I never thought of joining a private these things. your Not wife never at is all. also
Your wife is also as humble as you are. Absolutely, sir. More humble than me, I would say. And whatever is been my success story, whatever you take it, or whatever has happened, positive development that has happened, I would attach it to the sheer luck that she has given to me. In terms of balancing all the financial act or whatever, emotional act, whatever, she is my main pillar of this strength. Yeah, it's very surprising in this competitive world. You guys are so humble as a human. That's like really great. That's a really emotional moment you're carrying, because see, many times the doctor becomes like a gaudy character, like I'm a god kind of a things happens. It never came to you. Uh, Sir, Life. my specialty today, cardiac surgery, teaches you a lot of lessons in a very hard manner. Wow. The moment you start thinking too big for yourself, Right. you become grounded in the next case itself, sir. It compels you to think, why the hell did you ever become a cardiac surgeon, sir? Oh. Believe you me, I'm not exaggerating. This is the thought which comes to us at the midnight. You are exploring for the patient is bleeding. You are trying to do everything. You are not able to arrest the bleed. You are trying hard. Every steps you are following. And then you thinking, why the hell did I become a cardiac surgeon? So this is one specialty, sir, which is a great leveler. It'll keep your shoulders absolutely at the level headed, sir. Always. This is the khubi of this super specialty, sir, cardiac surgery. It keeps you level headed. Still you go home, अपने गांव जाते हैं अभी भी? जाता हूँ सर, अभी भी जाता हूँ. At least once in a year, I definitely make a trip. And what is your activity there in a village? Uh, there, the activities is very limited now for a simple reason because I go for very few days there now. Unlike earlier time, 2-2 महीने में हम जाके वहां काटते थे. Now we just go for what, 2 days, 3 days, 4 days, meet some friends, do some, uh, consultation of whatever thing that you have in the village level. Because my parents are continue to be there, sir, and we are fortunate, sir. Both my parents are still there. My younger brother with his family is still there, sir. My sister is also residing in that area. So it becomes a family trip. All the places we keep on visiting, and just 2-3 days you have meet with your friends, all acquaintances. Do whatever best you can do. You can see the patient there. Somebody is needy, just help them out, and come back. Do the people come This for is what we have been financial? doing. Do people हाँ जी come? सर. लोग आपके पास फाइनेंशियल हेल्प के लिए भी आते हैं क्या, वहां के ये गांव? सब बिल्कुल आते हैं सर. And I help them out in village, whatever level. Uh, I will share with you, sir, today a very interesting facet. My younger brother, there was a huge gap, sir, between me and my other siblings also, because my education had been on scholarship. They could not get that scholarship, so they have studied locally. There is a huge gap. Now, in the family tree, there's a huge gap. Now, I'm very happy to share with you is that I have brought up all the children of my younger brother and my sister and got them educated, sir. Kept them at a central place in Purnia oblique Katyar, got them educated, and all of them are now doing some job. आपका गांव का So, नाम क्या है और पूर्णिया से कितना दूर है? sir, Purnia से it's exactly about 38 kilometer. हम्म. गांव का नाम है मेरा सुखसेना, और जहां से मैं रहता हूं अभी नाना जी की जगह पे, दैट विलेज नेम इज साहवान खूट, सर, जहां से वो गुड्डू भी है, सर. वो जो अच्छा. आपका वो सिंह जो है ना, ही इज फ्रॉम द सेम विलेज, सर. अच्छा. वो मेरा वो मेरा ननिहाल है, वो नानी का घर है मेरा. अच्छा, आज मुझे स्वर्ण का पहली बार नाम पता चला, उसका नाम गुड्डू है. हाँ हाँ. जब वो सीए ही करता था इज तो कॉल्ड मेरे से गुड्डू, पढ़ता सर, इन था. विलेज. हाँ. राइट, 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 राइट. अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ कि गांव के हेल्प लोग आए आपसे कुछ हेल्प मांगने के लिए, पैसे या कुछ भी, और आपने वो हेल्प नहीं किया या जॉब नहीं लगाया, तो उसके बाद उनका बिहेवियर आपके प्रति क्या था?
सर ऐसा होता है, वो दिस मिक्स बिहेवियर एंड इज एक्सपेक्टेड बिहेवियर सर, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। मतलब काफी बार ये होता है कि मतलब कि किसी को कुछ अपने सोच से आप आए हो हाँ। और उसको वैसा नहीं मिला तो वो ठीक है, कुछ दिन के लिए रूठ जाते हैं, वो बात नहीं करेंगे, ठीक है, दैट्स ओके। You cannot, I mean, you possibly cannot do absolutely as per the tuning by themselves, na, sir. That may राइट। not be feasible every time. ओके। But whatever best we can do, we have been doing it. That is the हाँ, bottom line. आपके हाथ में यही है, इससे ज्यादा आपका कुछ है ही नहीं, राइट। हाँ, आपके हाथ में यही है, जो हो सके कर दो, और जब नहीं कर सको तो थोड़ा हाँ जी, गाली सुन लो। ठीक है ना, थोड़ा गाली सुन बिल्कुल लो, कोई सर। फर्क पड़ता, दैट्स एक्सपेक्टेड गाली, राइट। Oh, that's good. It's amazing to talk to you. I believe that I have to do another podcast for knowing so many secret, in fact. अच्छा सर, एक बात बताइए, जब आप मेडिसिन कर रहे थे, जब आप यूजी में थे, अंडरग्रेड में थे, तो या आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे मेडिकल का, तो उस समय फिजिक्स भी पढ़ाई जाती थी। सर, ये आपको तब नहीं लगा कि फिजिक्स और फिजिक्स का क्या नीड है मेडिसिन में, या केमिस्ट्री का क्या नीड है? कभी ऐसा नहीं लगा, व्हाट इज द नीड ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? नहीं सर, एक्चुअली अगर सच में बताइए तो उस लेवल की थिंकिंग उस समय में हमारी नहीं थी सर, टू बी अच्छा, वेरी थी ऑनेस्ट नहीं। विथ यू। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट राइट इट राइट। वाज नॉट देयर, वी नेवर थॉट ऑन दिस लाइन एट ऑल। हाँ, कभी नहीं सोचा था, फ्रैंकली। that's good. Ladies and gentlemen, this is a candid confession of a glorious and glorified doctor who has given his life for the service, not for the money, for the humanity, with the humility, and not with the something, the show, pomp, and flexes natures. That's the today need of a doctor. It's not like I'm a god or this much money you have to spend, because how much is too much, this family, this couple had decided long back. Sir, some of the rapid fire question I'm going to ask, right, sir? Right? And then we'll Thanks. end up this. And then, of course, saving lives or increasing the quality of a life, which is better? Which gives you more? Sir, it varies, sir, from place to place. Okay. Saving life, some limb maybe particular places that will be more important. Hmm. The improving the quality of life may be like I will tell you a situational analysis. I'll give you in war-torn areas, in the war zone surgery. The aim is more saving lives and limbs there. That is the take there, sir. Whereas if I'm operating on a, let's say, cancer patient, for example, here the quality of life is more important than saving the lives. Ever any patient ask you, let me die? No, not really, sir. Not really. Not really. Treating symptom or finding root cause, which is more important? Finding the root cause is more important. Work-life balance or career growth for a medical student? Sir, have a purpose. Have a purpose, sir. You have your personal brand. You should have. You should have networking in a big way. And you should have a, in the modern parlance, sir, you should have a digital presence of yours. Digital presence and networking is compulsory. Very important today's contemporary time. Your credibility is because of your digital presence today, sir. Your visibility is your credibility, sir, today. Your visibility is your credibility, even in medical science. Now, a local transport mode or luxury car, which is more important for a doctor? I mean, it's again depends upon the mindset. It's totally mindsets. How much is too much for you? That is too much for you. Okay. Prevention or treatment, what is more important? I couldn't get the question, sir. Prevention or treatment, what is more important? Prevention. Always prevention is better, sir. Prevention is always better. Patient care is more important or research on the patient? Patient care? Or research or patient? No, sir. The see, we should have a uh, in today's contemporary times, sir. You should have a triveni of patient care, medical education, and research. I would put patient care much more important than the research. Wow. Well, ladies Research and can take a gentlemen, backseat as far as the patient care is concerned. yeah.
Ladies and gentlemen, this is a candid conversation with Sushil Jha sir. The next learning from his life is that be simple, sober. And सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज डॉक्टर साहब से सीखने के लिए अगर चीज आप देखें तो stay connected with the root and respect root. Your family first, your ethic first, your integrity first, your service first. If you carry this, then the India will be a place like a heaven. Then people will not love to leave India. They will love to be in India. He might have got thousands of the chances to leave India and go abroad with the kind of experience he has. But he chose India to be true Indians. That was exactly learning. So much learning from him. I'm going to request him, sir, लाइफ ने जो आपको सिखाया, लोग उसको क्या क्या सीखे, कैसे कैसे सीखे, 1 मिनट के अंदर फटाफट बोल दीजिए, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन द लाइफ with in comparison to money. Just tell sir one message to my listener and even medicos, because this podcast will go in the medical community as well. Yes, life learning. इन सर मेरा तो यही रहेगा कि हर आदमी को, हर व्यक्ति को लाइफ में एक पर्पस डेवलप करना है सर। Correct. एंड उस पर्पस के अंतर्गत उसने अपने आप को ऐसे सांचे में ढालना चाहिए उसको, Right. जिसको कि हम अपना पर्सनल ब्रांड वैल्यू भी कह सकते हैं। Right. एंड with his philosophy of the, through the patient care, through the medical education, Hmm. through the research networking, Hmm. through these three templates, they should make a networking for themselves to increase their visibility and improve their credibility, sir. This is what I can tell you. वाह, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं विथ एक्सपीरियंस विजिबिलिटी लीड्स टू द क्रेडिबिलिटी, ये रखना बहुत जरूरी है। भगवान पे मत छोड़िए, अपने तकदीर पे मत छोड़िए, जो कहते हैं वो बताना भी आना चाहिए। इज दैट सर? जो आप करते हैं लोगों को पता भी होना चाहिए, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल So सर। now with this kind conversations, I must watch it and then let me know whom should I invite on my podcast. My podcast is to bring the real talent, real work in the in the world. It's not the platform where you come for the marketing. This is a platform where I invite people to showcase the work of unsung hero. So मेरे लिए सुशील झा सर और आपके लिए सुशील झा सर एक अनसंग हीरो हैं, जिन्होंने देश और आर्मी के साथ साथ लोगों के लिए बहुत बहुत कुछ किया है, और ऐसे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यहाँ पे मैं सर से विदा लूंगा विद अ लॉट ऑफ थैंक्स टू हिम दैट ही फाउंड आउट द टाइम टू कम आफ्टर ऑपरेशन, राइट फ्रॉम द ऑपरेशन हॉल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।